Okay, all devotees, please excuse me. We ran into some technical difficulty. Main difficulty was my own nature. I was late with the other class. So please We forgive know me. that Prabhuji was so packed up with the classes. मैंने So किसी को भी नहीं no worries, please accept our humble obeisances. Vancha kalpatarubhyacha kripa sindhuev. कौन सा कार्ड कहाँ पे बड़ा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, His Grace Sarvdrik Prabhu की जय, सभी भक्तों की जय जयकार हो. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Guru and Goram. Srila Prabhupada ki jai. जय Heartiest welcome, Prabhuji. We are so happy to see you and thank you so much for giving your valuable time. It is my pleasure to be here. It's a great opportunity for me for association. It's ours, Prabhuji. We always look forward to have your association. So, Prabhuji, today we want to have a question answer session with you. Hare Krishna. Yes, I hear you. We want to start with the question answer session. Okay, I'm going to try one thing. I'm going to try and log on with my mobile phone. Okay, Prabhu. Okay. It may be faster than this connection is very slow. So excuse me for just a moment. No problem, Prabhuji. Okay, I'm back. I logged on with my phone. It's much faster than the temple internet right now. Okay, Prabhuji. So, vancha kalpatubhischa kripa sindhubhye vacha patitanam pavanibhyo Vaishnavibhyo namo namaha. All glories to all Vaishnavis. All glories to Matajis. All glories to Srila Prabhupada. All glories to His Grace Sarvdrik Prabhu. Prabhuji, welcome to the class. Thank you so much for your valuable time and association. So, Prabhuji, can we start with the question answer session, or you want Yes. to do Kirtan first? We're already late. Let's begin with questions and answers. Okay. So I request all the members who want to ask questions, please raise your hands. Okay. So we start with Vanna Mataji. Mataji. Hare Krishna, Prabhuji, Dandvat Pranam. Prabhuji, my question is, a long time ago, someone had asked me this question, so that this question stayed in my mind. So somewhat I know the answer, but I want you to answer because you will give a perfect answer. I So hope. she asked me
that during Mangla Aarti in every ISKCON temple, we offer lamp to the Radha Krishna deities. Like in Punjabi Bagh, we have Radha Radhika Raman, Krishna Balram, Jagannath Baldev Subhadra, and Gaur Nitai also. So we offer lamp to them, but we sing Gurvashtak, the glories of Guru. So she said it is just like as if you are looking at someone and talking to someone else. So what could be the answer, Prabhuji, for that? Why we There sing is- Gurvashtak and we are offering lamp to the deities? The answer is in the Guru Vandana prayer we sing every day. We Yes. say Jaha Hoiti, that Jahara Prasadi Pai, Krishna Prapti Jaha Hoiti. Krishna Prapti, how do we get Krishna? We get Krishna from Guru. Without having a relationship with Guru, there's no relationship with Krishna. Tadvidhi Pranipatina Pariprashnena Sevaya. Upadekshanti Te Jnanam Jnaninas Tattvadarshana. You want to be Tattvadarshi, you want relationship with Krishna, then you have to accept Guru. So Krishna says, and actually Bhagavatam says, that serving Guru is more important than serving the Lord. If Guru and Krishna are standing side by side, who do you offer your pranam to first? To Guru. So when we're offering worship to Radha Krishna, we're simultaneously offering to Krishna, to Guru. First thing goes to Guru, then Chaitanya Mahaprabhu, then Shaligram, Krishna Balaram, Varnitai, Radha Krishna. There's a system of approaching Radha Krishna, not directly. Is this an answer? Is this the answer that you needed? Yes, Prabhuji. हरी Exactly. We need ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना. मैं अपना हरे आंसर क्वेश्चन हिंदी में बोल देती हूँ, फिर आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा. ठीक है. तो मेरा प्रश्न ये था कि किसी ने मुझसे पूछा था कि हम जब मंगला आरती सुबह होती है तो हम गुरुवाष्टक गाते हैं, गुरु की ग्लोरीज गाते हैं, जबकि हम लैंप ऑफर कर रहे होते हैं भगवान के विग्रह को. तो ये डिफरेंस उन्होंने पूछा कि ये तो इस तरह हो गया कि आप देख किसी को रहे हो और बात किसी और से कर रहे हो, तो इसका क्या जवाब होना चाहिए था, ये मैंने प्रभु जी से पूछा. तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से आंसर दिया. यस माता जी, आप बताओ. प्रभु जी ने कहा कि हमें कृष्ण तक पहुंचने के लिए गुरु के माध्यम, बिकॉज हम गुरु अष्टकम इसलिए गाते हैं क्योंकि हम कृष्ण से प्रे कर रहे हैं गुरु के थ्रू. तो हमें गुरु कृष्ण को रीच आउट करने के लिए गुरु के थ्रू जाना होता है. प्रभु जी, कैन यू रिपीट योर आंसर वंस अगेन सो दैट आई कैन ट्रांसलेट बेटर? We sing in the morning that Jahara Prasadi Pai, I can't remember, Krishna Prapti Hoy Jaha Hoite. That we cross over the whole material creation by grace of Guru, and by grace of Guru, we get Krishna. Last verse of Shikshastra, Guru Vashtakam also. Yasya prasadi, Bhagavat prasado, yasya prasado, nagati kutopi. Nagati means we can't go, we can't move towards Krishna, we can't go to Krishna. Nagati kutopi, we have to get mercy of Guru beforehand. We approach Guru, we approach Krishna through Guru. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हम कृष्णा को अप्रोच, कृष्णा तक पहुंचने के लिए हमें गुरु के थ्रू जाना पड़ता है. तो हम गुरु की मर्सी के बिना कृष्णा तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए हम गुरु अष्टकम पहले गाते हैं. Everything is clear? आप लोगों को ये आंसर समझ में आया? So this is the way in which Krishna accepts worship. तो यही तरीका है कि कृष्णा हमारी प्रेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं जब हम गुरु के थ्रू उन तक पहुंचते हैं. Nobody can approach Krishna directly. The public does not understand this, and that is the reason for such a question. हम ये सब लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम डायरेक्टली कृष्णा के पास नहीं जा सकते हैं, हमें गुरु के थ्रू ही जाना पड़ेगा. For example, on Janmashtami, lakhs of people come and they want to offer obeisances to Krishna. They want to offer some dakina, some flowers, some fruits, some prayer. This is wonderful. बहुत लोग प्रभु जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जन्माष्टमी पे बहुत लोग आते हैं जो फ्लावर्स चढ़ाना चाहते हैं, जो ओबेसेंसेस दंडवत करना चाहते हैं, प्रेयर्स करना चाहते हैं. But who is there on Vyas Puja the next day to worship Prabhupada? पर अगले दिन कौन होता है व्यास पूजा पे प्रभुपाद को वर्शिप करने के लिए? The devotees that worship Guru can have a relationship with Krishna.
Those that do not can have a relationship with Krishna. This is what the necessity of initiation. अगर हम गुरु को नहीं पूजेंगे तो हम कृष्ण के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकते। ये बहुत जरूरी है कि पहले हमें गुरु के साथ रिलेशनशिप बनाना है, गुरु तक पहुंचना है, फिर ही हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। Chakudan dilo jay janme janme Prabhu say. We say, Guru is, you're my Prabhu, you're my Lord, birth after birth. प्रभु जी कह रहे हैं कि गुरु आप मेरे लॉर्ड हैं, आप मेरे भगवान हैं। Janme janme, birth after birth. बर्थ आफ्टर बर्थ, आप हर जन्म जन्म आप ही मेरे गुरु हैं। The purport of this is that in the spiritual world, everyone is engaged in Lord's service through one's guru. So to get service in the spiritual world, one has to have guru. हमें इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान की पूजा करने के लिए गुरु चाहिए, गुरु के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। Does everybody understand? यस प्रभु जी। अब सबको समझ में आया? किसी को कोई शंका है इसमें तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं फिर से इस पर। We have another hand up. Okay. Nupur Mataji. Hare Krishna Prabhuji, please accept my humble obeisances. Except mine. My question is, how can we remember Krishna in all the circumstances, whether the circumstances are not favorable, whether we are associating with non-devotees, or whether someone is criticizing us? So please, Prabhuji. The first thing. माता जी का क्वेश्चन ये था कि हम कृष्णा को हर समय कैसे याद कर सकते हैं, चाहे कोई विपत्ति हो, चाहे कोई हमें बुरा कह रहा हो, चाहे हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही हो, तो हम कृष्णा को हर समय कैसे याद रख सकते हैं? हो रही थी मेरी टायर। The first thing to understand is to not be defined by what other people think of you. हमें ये नहीं सोचना है कि और लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। If someone says you're stupid, does that make you stupid because someone says so? क्या कोई आपको पागल कहता है तो क्या आपको पागल कहने से क्या आप पागल बन जाते हैं? This is an unacceptable way to think of oneself, to be defined by what someone else says. ये अनएक्सेप्टेबल है कि आप लोगों के कहने के हिसाब से अपने आप को वही समझने लगते हैं जो लोग कहते हैं। If someone says you're 10 feet tall, does that make you 10 feet tall because they said you're 10 feet tall? क्या अगर कोई कहता है कि आप 10 फीट लंबे हैं तो क्या आप 10 फीट लंबे हो जाते हैं? We think, oh, that's ridiculous. इसका कोई मतलब नहीं बनता है। But sometimes someone says something hurtful, you're stupid, you're ugly, you're low class, you're from a low caste. They may say something hurtful to us, but we take it to heart because we think it's meaningful. It has no meaning what they say. बट अगर कोई हमें कहता है, कोई बुरी बातें कहता है कि तुम सही अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, पर हम तब उनकी जो भी कही हुई बातें होते हैं वो दिल पर लगा लेते हैं। So don't be defined what unhappy, envious people say about you. आप अपने आप को दूसरे लोगों की कही हुई बातों से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपसे जलते हैं शायद। सॉरी। Find people that care about you, that love you in the association of devotees. ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपसे प्यार करें, जो आपको स्नेह दिए, और वो डिवोटीज हैं जो आपको प्यार और स्नेह दे सकते हैं। Devotees want to bless you. डिवोटीज आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। Devotees fold their hands to you. They call you Mataji or Prabhu. डिवोटीज आपके सामने हाथ जोड़ेंगे और आपको माता जी और प्रभु जी कहेंगे। क्या बाहर कोई कहता है ऐसा? They bow down to you. They want to feed you. They want you to be happy. They want you to go back home, back to Godhead. वो आपके सामने दंडवत करेंगे, आपके लिए प्रेयर्स करेंगे और ये चाहते हैं कि आप गोलोक धाम जाएं।
So stay in association. balance. ये कह रहे हैं कि कभी कभी आप परेशान हो सकते हैं, बट आप एक डक की तरह हो जाए, बतख की तरह हो जाए। आपके ऊपर कोई पानी डाल रहा है पर वो पानी निकल जा रहा है, हट जा रहा है, आपके ऊपर नहीं लग रहा है। So someone says something, so what? So what? Who cares what you think? किसी और को कोई फर्क प्रभु जी, कैन यू रिपीट दिस लाइन? That someone says something negative to you or is gossiping about you, say, who cares? Kya kare? What to do? Who cares? अगर आपके बारे में कोई कुछ बुरा कह रहा है तो आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए कि अब क्या कर सकते हैं, वो कह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। Is that okay, Nupur? Is that helpful to you? Yes, Prabhuji. But actually, my question was, how can we remember Krishna in all the circumstances? Because this will happen with us, and we will deal with all the anarthas. Every day we have to face so many circumstances. But how can we remember Krishna? Okay, this is the first half to your question. I forgot that. तो The answer to that part is that even when something unhappy happens, you should see this is a lesson coming to me from Krishna. ओके, तो माता जी का क्वेश्चन ये था कि माता जी ने कहा कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा परिस्थिति में आना है, या ऐसा चाहती हूँ कि मैं हर समय कृष्णा को याद करूं, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। तो प्रभु जी ने कहा कि अच्छा, मैं आपका सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन आप समझा। प्रभु जी, कैन यू रिपीट योर आंसर वंस अगेन? आई वाज ट्रांसलेटिंग That whenever something comes to us, something good or something bad, we should say this is coming through the will of Krishna, and it's for my betterment, to make me better devotee. तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि कुछ भी बुरा हो या अच्छा हो, ये सब कृष्णा ही चाह रहे हैं मेरे लिए। इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि कृष्णा मुझे एक बेहतर भक्त बनाना चाहते हैं। Kunti Maharani prayed, Vipada Santata Shaswat Tattva Tattva Jagat Guru, Bhavato Darshanam Yatsyat Apunar Bhavadarshanam. She prayed after hearing about all the horrible things, or telling Krishna all the horrible things that happened. House of Lac, they tried to kill Bhima, they tried to kill us in the forest, Hidimbi, all the horrible things that happened. She's praying, please give me more trouble. कुंती महारानी कृष्ण से प्रे करती हैं कि मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, उन्होंने भीमा को मारना चाहा, हमें जंगल में छोड़ दिया, हमें जलाना चाहा, बट फिर भी वो कृष्णा से प्रे कर रही हैं कि कृष्णा मुझे और विपत्तियां दे, मुझे और विपत्तियां दीजिए। Why do you think she would make such a prayer? Give me, does anyone pray to that? Everyone goes to the mandir, the masjid, the church, the synagogue, Gurudwara. Give me trouble, Krishna. Kunti Maharani is praying, Krishna, give me trouble. क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद जाए और वहां पे बोले कि मुझे परेशानी मिले, मुझे परेशानी मिले, मुझे परेशानी मिले? पर कोई भी ऐसा नहीं चाहता। पर कुंती महारानी कृष्णा से ये प्रे करती हैं कि मुझे परेशानियां मिले। He's saying, give me this trouble, because when I see trouble, I see you. And when I see you, Apanar Bhavadarshanam, I no longer see birth and death. वो ये कह रही हैं कि जब मुझे विपत्तियां मिलती हैं तो मुझे आपका ख्याल आता है, मैं आपको देख पाती हूँ, और जब मैं आपको देख पाती हूँ, व्हाट डिड यू से इन द एंड प्रभु जी? Apunar Bhavadarshanam, we don't see repeated birth and death. हाँ, ओके। एंड व्हेन आई सी यू, जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे जन्म और मृत्यु का भय नहीं लगता। So typically, when good things happen, a religious person thinks, oh, thank you, God. Thank you so much. You're very kind. जब कुछ अच्छा होता है तो हम ऐसा सोचते हैं, थैंक यू, हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, थैंक यू भगवान, आपने मेरे साथ अच्छा किया। But then when something bad happens, they may think, Krishna, why are you treating me like this? I'm your devotee. Why are you doing this to me?
पर हमारे साथ जैसे ही कुछ बुरा होता है तो हम कृष्णा को बोलते हैं, कृष्णा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों आप मुझे इतनी प्रॉब्लम्स दे रहे हो। So Kunti Maharani said, give me more trouble. तो कुंती महारानी, फिर भी हम ऐसा कहते हैं, पर कुंती महारानी ऐसा कहती हैं कि मुझे और परेशानियां मिले। Because in trouble and in happiness, in unhappiness or happy, in all circumstances of life, I see you. कुंती महारानी ये कहती हैं कि कुछ भी हो, बुरा हो या अच्छा हो, मैं हर सिचुएशन में आपको देखना चाहती हूँ, और जब भी मेरे पास प्रॉब्लम जाती है मैं आपको देख पाती हूँ, मैं आपके बारे में सिमरन कर पाती हूँ, आपको सोच पाती हूँ। And when I see you, I no longer see birth and death. और जब मैं आपको देखती हूँ तो मैं बर्थ और डेथ को नहीं देख पाती, मुझे जीवन और मृत्यु से भय नहीं लगता है, मुझे जीवन और मृत्यु नहीं दिखती है। So why do we suffer in this material world? तो हमें क्यों इस मटेरियल वर्ल्ड में सफर करना है, क्यों यहाँ पर रहना है? We suffer because we're born. If we stop birth, we stop all varieties of suffering. हम यहाँ सफर ही इसलिए कर रहे हैं, हम परेशान ही इसलिए हैं क्योंकि हमने जन्म लिया है। अगर हमने जन्म नहीं लिया होता तो हम सफर नहीं करते। So this is the process to see Krishna at every step of our life. तो यह प्रोसेस फॉलो करना है हमें कि हम जब भी किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, किसी भी समय, किसी भी विपत्ति या अच्छे उसमें हो, To see Krishna when there's happiness and to see Krishna when there's unhappiness. हमें कृष्णा को बुरे समय में भी देखना है और अच्छे समय में भी देखना है। So to bring our mind, to be able to bring our mind to that conception, that way of thinking and feeling, we practice sadhana bhakti. ताकि हमारी बुद्धि हर समय में कृष्णा को देख पाए, कृष्णा के बारे में सिमरन कर पाए, हम साधना भक्ति करते हैं। To purify our consciousness, to enlighten our consciousness, to bring our consciousness to a higher level of understanding where we see Krishna is behind everything. Everything is good, everything has meaning. जब हम साधना भक्ति करते हैं तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को उस स्तर पे लाते हैं जब हम कृष्णा का हाथ हर चीज में देख पाते हैं, चाहे वो अच्छा हो और बुरा हो। हम समझ पाते हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो कृष्णा की मर्जी से हो रहा है। And sometimes that which seems to be a great obstacle or a great trouble in our life can turn out in the future to be a great blessing. और कभी कभी जब हम ऐसा सोचते हैं तो जो बुरी विपत्ति आती है वो एक अच्छे अवसर में बदल जाती है। So we should have faith in Krishna, that he's our well-wishing friend in happiness and in distress, but always learn to fix your mind on Krishna. जब हमें कृष्णा पे फेथ रखना है, कृष्णा इज आवर फ्रेंड, कृष्णा हमारे मित्र हैं, कृष्णा हमारे वेल विशर हैं, कृष्णा हमारे गुरु हैं, हम कृष्णा को ही हमें हर चीज में देखना है, कृष्णा हमारी हर चीज में सहायता करेंगे। Is that okay, Mataji? Yes, Prabhuji, thank you so much. Please bless me so that I can remember Krishna in all the circumstances. Thank you so very much. So Lakshana I bless you to always stay in association with the Bhakti Mataji. Because she always wants to help you and see you happy in Krishna consciousness. प्रभु जी माता जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप हमेशा डिवोटीज के एसोसिएशन में रहें और कृष्णा को याद रख सकें। सुलक्षणा सीता माता जी, सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। Hare Krishna, Dandavat to you, Mataji. Vaishnavi Pranam. Thank you so much, Prabhu ji. As I read in Srimad Bhagavatam 1.7.7, there is given like Bhakti Utpadate Punsha Shok Moh Bhayapa. But this material fear isn't leaving me, Prabhu ji. When I feel like such thought, and suddenly comes in my mind that I don't have devotional level. How can I understand this thing? माता जी का प्रश्न Can you है, repeat the question? I couldn't quite understand it. माता जी आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं? Yes, Prabhuji, as I told that I usually read in Srimad Bhagavad Gita, this so many time I read. So it's 1.7.7. It is given Bhakti Utpadate Punsa Shok Moh Bhayapa. But when I feel
it in myself, I usually feel fear. And I suddenly comes in my mind that I don't have devotional level. That's why I'm feeling this kind of situation. So how can I understand this thing? Ma- That Bhaktir Upadhyate, oh, I'm sorry. Yeah, I didn't translate the question. Mom. ओके माता जी का क्वेश्चन ये था कि वो भगवत गीता में 1.7 पॉइंट माता जी विच श्लोक एक 1.7 पॉइंट 7 जो श्लोक है उसमें जब वो पढ़ती हैं तो उसमें लिखा है कि आपको मृत्यु का भय नहीं करना है, पर उनको मृत्यु का भय हो जाता है तो वो सोचती हैं जी जब जब मुझे मृत्यु का भय होता है तो उनको लगता है कि मैं अपनी भक्ति में और साधना में उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रही हूँ कि मेरा मृत्यु का भय हटे। मृत्यु का भय नहीं है, इट इज शोक भय भयापा। दैट मीन शोक मोह भयापा कि ऑल द फियर्स एंड लेमेंटेशन खत्म हो जाती हैं, पर उनको डर लगता है कि उनके अंदर अभी डिवोशन ही नहीं है। द क्वेश्चन इज दिस। ओके सॉरी। Yeah, I understand the question. So it says Shoka, that Bhaktir Upadhyate Pumsam, Shoka Moha Bhayapa. So when bhakti rises, so bhakti isn't like turning on a switch, a light switch. Now it's dark and now it's light. तो भक्ति इट इज प्रभु जी इट इज नॉट अ स्विच। It is not like turning on a light switch. One moment it's pure darkness, next moment pure light. This is not bhakti. ओके भक्ति एक स्विच की तरह नहीं है कि जब आपने बटन दबाया तो अंधेरा हो गया या लाइट आ गई और बटन बंद किया तो अंधेरा हो गया। भक्ति इज नॉट, भक्ति एक बटन की तरह नहीं है। This bhakti utpadhyate, that it rises like the sun. ये भक्ति में बढ़ना पड़ता है, भक्ति एक सूर्य की तरह है। Sunrise, one moment is dark, then it gets gradually lighter, 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 lighter. Then the sun comes up and you can see everything very clearly. But even before the sun comes up, you can begin to see something. Bhakti is like this. भक्ति एक सूर्य की तरह है, जैसे अंधेरे में से सूर्य उदय होता है तो धीरे 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 रोशनी होती है, पर जैसे ही सूर्य उदय होता है तो आपको सब साफ साफ दिखने लगता है। पर जब सूर्य उदय हो रहा होता है तब भी आप हल्का हल्का देख पाते हैं। So bhakti is, even the sun hasn't risen, we can see everything clearly, even though we can't see the sun. जब सूर्य उदय नहीं होता है फिर भी हम देख पाते हैं, पर सूर्य को नहीं देख पाते हैं। So this means that as we progress in sadhana, the sun of Krishna bhakti arises in our heart gradually. And as it rises, shoka, moha, bhaya, fear, lamentation, shoka, and illusion gradually disappear. Not immediately as like turning off a light or turning on a light. जब हम भक्ति में आते हैं हमारे धीरे धीरे हमारा भय, फियर्स, लेमेंटेशंस और व्हाट फियर्स, लेमेंटेशंस एंड इल्यूजन। इल्यूजन मतलब Moha. मोह। हाँ, तो हमें भय मोह से दूर हटते जाते हैं धीरे धीरे करके। It happens gradually and proportionately. The higher the sun of bhakti rises in your life, the more the darkness is removed. जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है हमारे मन का अंधेरा अंधेरा हटने लगता है और रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। That's okay? सुलक्षणा सीता माता जी ठीक है, आपको सेटिस्फाइड है आंसर से? आई थिंक शी इज नॉट एबल टू Hare आंसर। Krishna. Yes, Prabhuji. Thank you so much. Thanks a lot. और कोई Bye-bye. क्वेश्चन Thank you for a nice question. ओके, पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Dandavat. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, my कृष्णा। question is, how can I control my mind while doing chanting? Can ओके, you translate? माता जी का क्वेश्चन ये है कि मैं अपने दिमाग को कैसे केंद्रित कर सकती हूँ जब मैं चैंटिंग कर रही होती हूँ। The word mantra means that which controls our mind. Man means the mind, tra, trayate, that which delivers the mind from the tendency to identify with this material world.
तो प्रभु जी कह रहे हैं मंत्र का मतलब है मन और त्र. मंत्र is something, mantra is can you come again प्रभु जी? मन को कंट्रोल करने वाला. मन को कंट्रोल करने वाला मंत्र. Tra means trayate. It delivers us, protects us from illusion, delivers us from material conception of life. ये त्र का मतलब ये है कि ये हमें जो मटेरियल इल्यूजन है, जो हम संसारिक उसमें फंस गए हैं, उससे हमें बाहर निकालता है. तो मंत्र हमारी मदद करता है जो हम इल्यूजन में फंस गए हैं उससे बाहर निकलने में. And it does that because mantra, Hare Krishna mantra, is not different from Radha Krishna. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हरे कृष्णा मंत्र राधा कृष्ण से डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है. Srila Bhaktivinoda Thakur said something amazing. He said, the holy name, Nam Prabhu, will come and take me by the hand and deliver me to Goloka. शिला Bhaktivinoda Thakur. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मंत्र ही मुझे डिलीवर करेगा, मंत्र ही मुझे यहाँ से निकाल पाएगा. So what does this mean? It means that the holy name has hands. Holy name has beautiful reddish feet. Holy name wears pitambara dhoti, wears Vajjayanti garland, has beautiful reddish lotus eyes, has beautiful kundala, more bhank, beautiful crown, beautiful bimba fruit lips, pearl-like teeth. Holy name is a person. प्रभु जी कह रहे हैं कि तो क्या इसका मतलब यह है कि मंत्र के हाथ हैं, मंत्र के पैर हैं, मंत्र ने धोती पहनी है, मंत्र के सर पर मुकुट है, क्या ऐसा है? मंत्र एक ह्यूमन है क्या? Not human. Not human. मंत्र एक ह्यूमन नहीं है. मंत्र एक इंसान ही है. मंत्र The name Krishna and the person Krishna are identical. तो मंत्र कृष्णा ही है. कृष्णा की मंत्र में और कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही हैं. But there's one difference. पर एक डिफरेंस है. Anybody know the difference? क्या किसी को इस डिफरेंस के बारे में पता है? That one difference is that Krishna's name, Krishna Nam, is more merciful than Krishna person. पर डिफरेंस ये है कि कृष्ण नाम ज्यादा दयामय है कृष्ण के So when we chant Krishna's name, we're personally in association with Krishna, and it purifies our chitta, our consciousness. जब हम कृष्ण का मंत्र करते हैं, कृष्ण मंत्र से हमारा प्योरिफिकेशन होता है, हमारे भाव बेटर होता है. Chaitanya Charitamrita says, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Gavanai, Shravanadi Shuddha Chitte Koreya Uday. That by hearing, love of God awakens in our heart. This is the process of self-realization, to hear and chant Krishna's holy name. जब हम सुनते हैं, सुनने से हमारे मन में, हृदय में कृष्ण प्रेम बढ़ता है, और यही एक मात्र तरीका है सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्मज्ञान का. Does that answer your question, Puja Mataji? पूजा माता जी, आप संतुष्ट हैं आंसर से? Yes, Prabhuji, thanks for the beautiful answer. Okay, thank you for a beautiful question. Thank you. Okay, याचना माता जी. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Never Pranam Mataji. Dandavat Pranam Prabhuji. Question. My question is actually this question often comes in my mind. Question is, when did Krishna create all the living entities, and is that count a fixed number? And if not, why did he create more entities, more living entities? Living I entities. didn't catch the second question. Mataji, you're talking about humans, living entities. Yeah, like Jeev. Yes. Okay. Why did he create? And then what was the second question? When did Krishna create living entities? When did? Okay. And is that number a fixed
Is that a fixed number? Okay. तो माता जी का प्रश्न ये है कि कब कृष्ण ने ह्यूमंस को बनाया, इंसानों जीव को जीव बनाया, जीव लिविंग जीव, एंटिटीज मींस जीव इन जनरल। अच्छा, जीव को बनाया, और क्या उसका कोई काउंट है, क्या उसकी कोई गिनती है कि कितने जीव बनाए और कितने जीव हैं? So jivas are described that jiva is described as anadi. There is the origin of the soul is beginningless, has no beginning, anadi. Like we say about Krishna, anadi Adi Govinda, he has no origin. Soul also has no origin. तो जीव का मतलब है अनादि, तो देयर इज नो ओरिजिन, किस कोई ऐसे बट माँ कैन यू ट्रांसलेट? इटर्नल है, वो शाश्वत है। जीव जो है इस इटर्नल, शाश्वत, अनादिकाल से है। So eternal means there is no origin, no beginning and no end. No end. तो एटर्नल का Give an मतलब, example. Go ahead. एटर्नल का मतलब है कि इसकी कोई शुरुआत नहीं है, ना ही कोई अंत है। Srila Prabhu gave an example to help us try and understand something that's very difficult to grasp. श्रील प्रभुपाद ने हमारी मदद करी है इसको समझने के लिए। He said, when we're born, our fingernail is also born with us. जब हमारा जन्म होता है तो हमारी ये जो उंगली का नाखून है ये भी हमारे साथ जन्म लेता है। So in relationship with our body, it's beginning us. It comes with us. It's part and parcel of our body. तो ये हमारे शरीर के साथ जन्म लेता है, तो ये हमारे साथ ही जन्म ले रहे हैं। The soul is part and parcel of Krishna. His angs, Jiva Bhuta Sanatana, Bhagavad Gita says. And as there's Krishna, there is a soul. Why? Because he wants to enjoy relationship. He wants to enjoy rasa, rasa vaisaha. तो हम सब कृष्णा के अंग हैं, तो जब कृष्णा आए, हम सब कृष्णा के साथ आ रहे हैं। पर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कृष्णा हमारे साथ एक रिलेशनशिप, हमारे साथ एक संबंध का आनंद लेना चाहते हैं। And how many there are? Bhagavad Gita calls them innumerable, asankhya. पर ऐसा कोई काउंट नहीं है, इनकी कोई संख्या नहीं है। Asankhya means you can't count them. There may be a limited number, but you can't count them. हो सकता है कि इसकी एक कोई लिमिटेड, मतलब कि एक कोई गिनती हो, पर हमें नहीं पता, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते, हम It's इनकी like saying गिनती नहीं कर सकते। how many grains of sand are on the beach? How many waves are on the ocean? ये तो ऐसे हो गया कि एक सैंड में जब हम एक बीच पे जाते हैं तो वहां कितनी रेत है, या जो समुद्र है उसमें कितनी वेव्स है। ये इस तरीके से हो गया कि हम अगर चाहें मनुष्य जीव को गिनना, We can say there's a limited number, but you can't count them. हो सकता है कि इसका कोई काउंट हो, कोई गिनती हो, पर हम इसे काउंट नहीं कर सकते। Is that helpful to you, Yachna Mataji? Yes, thank you so much, Prabhuji. Thanks for the wonderful answer. Thank you so much. Hare Krishna. Priyanka, ask your question. Okay. Prabhuji, my question is that I am trying to adapt a habit of hearing, and I think hearing helps me to collect more information or to understand more about chanting. But somehow I am not able to develop the taste in chanting. So what should I do? You should So continue hearing as much as possible in every little opportunity. We waste lots and lots of time. You should translate your question also, by the way. तो मेरा प्रश्न ये था कि मैं लेक्चर्स सुन पा रही हूँ और लेक्चर्स को सुनती हूँ, और उन्हें सुनने से मेरा चैंटिंग मुझे अच्छा भी लगता है और मेरा मन करता है चैंटिंग का, बट मैं फिर भी एक टेस्ट नहीं डेवलप कर पा रही हूँ, एक आदत नहीं डेवलप कर पा रही हूँ चैंटिंग की। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग के बारे में सुनना चाहिए और चैंटिंग करना चाहिए, उसी से मेरा चैंटिंग में मुझे आनंद आने लगेगा चैंटिंग करने में, क्योंकि हम अपना समय बहुत जगह पे व्यर्थ कर रहे हैं। वो माता जी करेंगे क्वेश्चन, माता जी के साथ जाएंगे। माता जी क्या है?
If we examine our day, we'll see we waste hours of mental energy every day. अगर हम अपनी दिनचर्या देखने लगेंगे तो हम कितने घंटे वेस्ट करते हैं. We should try and fill those wasted hours, those wasted mental hours with Krishna. हमें वो जो समय हम वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, हमें वो कृष्ण की तरफ कृष्ण के बारे में एक्टिविटीज करने में स्पेंड करना चाहिए. There's a story that a motivational speaker told his audience. एक स्टोरी है जो मोटिवेशनल एक स्पीकर ने अपनी जनता को, जो भी उनसे सुनने बैठे थे, उनको सुनाई. Put a big glass jar on the table and then put big rocks inside. उन्होंने एक बड़ा सा बर्तन लिया कांच का और उसके अंदर पत्थर रखे. Your voice keeps going out, Mataji. Is that your headphone or is that the connection? My voice is breaking. Yes. For me, yes. For Okay. anybody else? Nishta Somebody- Bhakti Mataji, you hear her? Yes, Prabhuji, it breaks. Priyanka's voice breaks in between. Maybe the jack connection or something. Let me reconnect. Give me. Unmute yourself, Yeah. Priyanka. Unmute yourself and speak again. Is it fine now? Yes, better. Okay. So he put big rocks inside the big glass. And then he asked the audience, is this container full of rocks? तो उन्होंने उस जार में बहुत सारे पत्थर रखे और पूछा कि क्या ये जार भरा हुआ है. They said, oh yes, it's quite full. तो लोग कहने लगे कि हाँ, भरा हुआ है. He Quite said, full. no, it's not full at all. पर Then he takes उन्होंने some smaller rocks and he pours the rocks. The smaller rocks come down around the big rocks. ओके. तो उन्होंने पूछा क्या ये भरा हुआ है, तो लोग कहने लगे हाँ भरा हुआ है. बट उन्होंने बोला नहीं, ये भरा हुआ नहीं है. तो वो छोटे पत्थर लाए और उन्होंने छोटे पत्थर डाले. तो छोटे पत्थर बड़े पत्थर के बीच में समा गए, बीच में जहाँ जगह थी. And then he asked them, is it full now? Everyone said, yes, it's full. We can understand. Now it's full. Right up to the top. It is full to the brim. पर सब पूछने पर फिर उन्होंने फिर से यह प्रश्न किया, क्या ये भरा हुआ है? तो सब कहने लगे हाँ ये भरा हुआ है, अब तो ये ऊपर तक भरा हुआ है. He said, no, it's not full at all. फिर वो उन्होंने फिर से ये पूछा क्या ये भरा हुआ है. सब ने बोला कि हाँ भरा हुआ है. बट फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी भी नहीं भरा हुआ. Then he poured some dry sand, and the dry sand filtered in between the big rocks and the sand rocks. Then he said, now is it full? Everyone said, yes, it is full. Clearly, it is full. फिर वो मिट्टी लेकर आए, रेत लेकर आए और उन्होंने रेत डाली और रेत ने बीच में से अपनी जगह बनाकर रेत भी उसमें समा गई, बीच में आ गई. तो फिर से उन्होंने ये पूछा कि क्या ये भरा हुआ है? And he said, no, it's not full at all. And he poured water. And the water came in between the sand, the small rocks, and the big rocks, and completely filled the container. फिर उन्होंने ये सवाल पूछा क्या ये भरा हुआ है? तो सबने कहा हाँ ये भरा हुआ है. फिर उन्होंने कहा नहीं, ये अभी भी नहीं भरा हुआ. फिर वो पानी लेकर आया और उन्होंने पानी डाला और पानी ने भी अपनी जगह बना ली और वो उसके अंदर पहुंच गया. So what is the message of this story? तो इस स्टोरी का क्या मैसेज है? The message is that every day we have our regular activities. We have college, we have work, we have school, we have family. We have the main things, the big rocks of our life. हम इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है? स्टोरी से हमें मैसेज मिलता है कि हमारी दिनचर्या में बहुत सारे काम है, स्कूल, ऑफिस, घर, बहुत सारे काम है. तो वो जो काम है वो जो बड़े पत्थर हैं उसकी तरह है. So what we choose to fill in those spaces is up to us. Will we fill it with Krishna or will we fill it with Maya? तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन पत्थरों के बीच में क्या डालना चाहते हैं, माया या कृष्णा. I'll give you an example in my own life.
प्रभु जी अपने जीवन काल के में से एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं। First thing I do in the morning is offer my obeisances to Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jagannath, Radha Krishna, Tulsi, and Vaishnavas. प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले जब सुबह उठता हूँ तो मैं दंडवत करता हूँ कृष्ण प्रभुपाद को, चैतन्य महाप्रभु को, जगन्नाथ जी को, राधा कृष्ण को और वैष्णव को। Then I turn on a Bluetooth speaker that has Srila Prabhupada's lectures loaded on the machine. फिर मैं ब्लूटूथ स्पीकर चलाता हूँ जिसके अंदर प्रभुपाद के लेक्चर्स लोड कर रखे हैं मैंने। Then I go to the bathroom, brush my teeth, take care of my body, get dressed, put on tilak. It takes 20 minutes. फिर मैं स्नान करने जाता हूँ, अपनी बॉडी का, अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ, तैयार होता हूँ और तिलक लगाता हूँ। ये 30 मिनट तक लग जाता है इसमें। Your voice was breaking up again. Is it breaking again? No, it's okay now. Okay. So for 20 minutes every morning, while I'm doing, I don't need to think about it. Where is my mind? When I'm brushing my teeth, I can be hearing Prabhupada. When I'm bathing my body, I can be hearing Prabhupada. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं नहाते समय क्या कर रहा हूँ। मैं नहाते समय, ब्रश करते समय प्रभुपाद को सुन सकता हूँ। We need to fill our day with hearing about Krishna. तो हमें अपने दिनचर्या के बीच में समय निकालकर कृष्णा के बारे में सुनना है। We can fill up, हम अपनी जो बकेट है उसको कृष्णा से भर सकते हैं। We should hear about Krishna every day, and we should read Prabhupada's book, something, a little something at least every day. हम प्रभुपाद के लेक्चर सुन सकते हैं, हम बुक्स पढ़ सकते हैं अबाउट कृष्णा, हम किताबें पढ़ सकते हैं कृष्णा के बारे में। Is that helpful? Yes, प्रभु जी, it is. Okay. Shobha Mataji has her hand up. शोभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। Hare जी, Krishna. प्रश्न ये है कि भक्ति करने के लिए शरीर माध्यम होता है, सामर्थ्य ना हो तो भक्ति कैसे की जाए? नहीं होती है। माता जी आप एक बार ही अपना प्रश्न फिर से करेंगे, बीच में आवाज आ रही थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि भक्ति करने के लिए शरीर माध्यम होता है, लेकिन जब शरीर में सामर्थ्य नहीं होती, जैसे मैं बहुत बीमार रहती हूँ तो मैं उतनी भक्ति नहीं कर पाती जो मैं करना चाहती हूँ। जैसे मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं धाम में जाना चाहती हूँ, पर मैं नहीं जा पाती तो मुझे बहुत ग्लानि होती है, मतलब अफसोस होता है कि मानव जीवन पाके मैं ये नहीं कर पा रही, तो मैं उसे कैसे करूं? प्रभु जी, her question is that कि to do bhakti we need the assistance of body, we need our body, but she does not keep well, so she has a regret that she is not able to go to the temple, do the service, go to the dhamma. So what she should do? There's nothing that can impede or stand in the way of our progress in bhakti. प्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे और भक्ति के बीच में खड़ा हो सकता है। If one has the will to practice bhakti. माता जी क्या बोल रहे हैं? मतलब अगर मैं घर में ही भक्ति कर लूं तो मुझे वहीं से संतुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए। Prabhu ji, she is saying that if I do bhakti at my home, so should I get satisfied with that? Chanakya said that some things we should be satisfied with one's wealth, with one's partner, with one's duration of life. One should be satisfied with some things in life, but other things we should not be satisfied with. One should not be satisfied with one's bhakti. One should not be satisfied with one's learning. Okay. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन काल में कुछ चीजों के साथ हमेशा संतुष्टि कर लेनी चाहिए, जैसे कि पैसा, घर, अपना पति या पत्नी, पर कुछ चीजों के साथ संतुष्टि नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हमारी भक्ति। But bhakti can be practiced anywhere.
पर भक्ति कहीं पे भी प्रैक्टिस करी जा सकती है। Because that same Lord who's on the altar in the temple is in your own heart. क्योंकि जो भगवान मंदिर में है वही हमारे मन में है। Krishna has no discrimination. He only responds to our love for him. So प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी can you come again? There was noise, I was not able to hear you. Yes, that Krishna responds to the bhakti, not to our living arrangement. कृष्ण हमारी भक्ति को देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हम कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब ये नहीं देखते हैं कहाँ से कर रहे हैं। There's no material impediment that can stand in the way of our bhakti. You can practice it anywhere. को ये चीजें हमारी और हमारी भक्ति के बीच में नहीं आती है, हम भक्ति कहीं से भी कर सकते हैं। यस प्रभु जी। माता जी आपको क्वेश्चन आंसर से संतुष्टि है? माता जी आप म्यूट पे हैं। माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। Thank you for a nice question, Mataji. नहीं, अभी नहीं। Okay, Abhi Prabhu ji, you can ask question. Hare Krishna Prabhu, Dandos Pranam. Pranam to you. My question is that, so we have the desire to do Krishna consciousness, to be Krishna conscious 24 hours a day, but we have these material attachments at the same time, which is not easy to give up. So even if we practice this Krishna consciousness 24 hours a day, it might maybe for 1 week or maybe for a few days or maybe for 1 month, I can continue, but because of the attachment, we keep on coming back to our, these material pleasures. So it's very hard to give up this all of a sudden. So how do we manage such things in that situation? Bhakti is a process. Oh, actually, quite good translation. Important question. Thank you. प्रभु जी का क्वेश्चन ये है कि हम कृष्णा कॉन्शियस में रहने की का प्रयास करते हैं, बट हम जो अपनी भौतिक इच्छाएं हैं या भौतिक चीजें हैं उनमें उलझ कर रह जाते हैं। तो हम 24 घंटे कृष्ण के को याद कैसे करें और हम अपनी भक्ति को कैसे करें, कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे रहें? The proposition of sadhana bhakti, the first principle is I am imperfect. I'm full of material desires. I'm thinking the goal of life is to stay here and be happy in the material world. I'm imperfect. This is the first proposition of bhakti. भक्ति का पहला रूल ये है कि हमें ये एक्सेप्ट करना है कि आई एम नॉट परफेक्ट, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं सबसे अच्छा नहीं हूँ। So Shastra says akama sarva kama va moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. That whether one is full of material desires, has no material desire, or is materially satisfied, one should take up the path of bhakti. Prabhuji, can you come again? I didn't understand that. That whether one is full of material desires, or whether one is desireless, no material desires, or whether one is self-satisfied, every category of person should take up the path of bhakti. Okay. हर कैटेगरी के इंसान को भक्ति लेना चाहिए। हो सकता है वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हो सकता है वो बिल्कुल संतुष्ट ना हो, और हो सकता है वो संतुष्टि की तलाश में हो। So everyone begins somewhere. Some devotees are born with very less attachment to the material world, and they're fit to be brahmacharis, sannyasis. तो
हर कोई भक्ति के लिए फिट है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम भक्ति कर सकते हो और नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो शुरुआत से ही मटेरियल चीजें, भौतिक चीजों से ज्यादा आसक्ति नहीं रखते हैं, तो वो जो होते हैं वो ब्रह्मचारी बनने के लिए परफेक्ट हैं। The majority of devotees enter Grihastha ashram and practice Krishna bhakti. पर ज्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं और फिर कृष्ण भक्ति शुरू करते हैं। From the position of absolute vision, they are the same, because what does a Grihastha want? He wants to go back to Godhead. Same as a brahmachari, same as sannyasi, vanaprastha. Everyone wants to go back to Godhead. From that point of view, they are all equal. पर सबका एक ही एम है, सब एक ही चीज चाह रहे हैं, सब लोग गोलोक धाम जाना चाहते हैं। तो हम लोग सब, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्था हो, चाहे कोई भी हो, हम सब जाना चाहते हैं गोलोक धाम। So one should find that situation where one can fight with Maya and be happy. तो हमें ऐसी सिचुएशन में माया से फाइट करना है और खुश रहना है, भक्ति करनी है। Is that helpful to you, Prabhuji? Yes, Prabhu. Thank you. Thank you. Don't be discouraged because you're not a pure devotee. Sure. Thank you. Actually what you are, Prabhu, you're a pure devotee, just covered like a diamond. A diamond before it's polished is an ugly looking stone. When it's polished, it becomes beautiful and sparkly and brilliant. So bhakti means just to polish our own nature and bring out the very best in our character by the practice of bhakti. प्रभु जी कह रहे हैं कि हम सब परफेक्ट डिवोटीज हैं, बट हम लोग जैसे डायमंड होता है, हमें पॉलिश होना है। हम जितना जितना पॉलिश होंगे उतने उतने बेहतर होते जाएंगे भक्ति में। It is said that every sinner has a past. No, every saint has a past and every sinner has a future. तो एक कहावत है कि हर संत व्यक्ति का पास्ट होता है, संत का पास्ट होता है, और जो आज बुरे कर्म कर रहा है वो फ्यूचर में एक संत बन सकता है। Every sinner has a future in Krishna bhakti, and saints have a past. Who can say, I never fell, I never committed any offense, I was never fallen? This is a world full of fallen people, but we have a brilliant, bright, brilliant, hopeful, blissful future in Krishna consciousness to go back to Godhead. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप नहीं करे हैं, जिसने बुरे कर्म नहीं करे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारे लिए आगे कोई होप नहीं है, हमारे लिए कोई फ्यूचर नहीं है। हम फ्यूचर में बहुत अच्छे डिवोटीज बन सकते हैं, बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। So no one should become discouraged. तो हमें बुरा नहीं मानना है और हमें अच्छे से भक्ति करने की कोशिश करनी है। I hope that is helpful, Abhay Prabhu. Thank you, Prabhu. Okay, Hare Krishna. Bharati Shivasto. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Dandavat pranam to you, Mataji. My question is that we hear any lectures and जितनी भी क्लास आप हिंदी में बोल सकते हैं भारती माता जी, कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। और शी इज जॉइंड फ्रॉम कानपुर प्रभु जी, कानपुर टेम्पल इस्कॉन। Oh yes, oh nice. Prabhu ji, we hear every class lectures and class very carefully, but after sometimes and any difficult situation of my life in material world, we forget that teachings and we feel very sorrow. How can we remember that teachings and in every situation and problem with Krishna consciousness? माता जी का प्रश्न ये है कि हम आपका लेक्चर बहुत अच्छे से सुनते हैं और आपकी जो टीचिंग्स हैं वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर कभी कभी जब हम जीवन में परिस्थितियों में आ जाते हैं जो परेशान करने वाली होती हैं, तो हम वो सारी टीचिंग्स, वो सारे लेसन्स भूल जाते हैं। One Vaishnava poet made a beautiful prayer. He said, Diyatam diyatam karno, niyatam niyatam vachaha, giyatam giyatam nityam, haranamayva kevalam. That hear the holy name over and over. Chant the holy name over and over.
sing the holy name over and over. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि आप बार बार चैंट करें, बार बार उसे सुने, बार बार कीर्तन करें. Actually, I was just in Kanpur. Before I came here, I was in Kanpur. प्रभु जी कह रहे हैं माता जी कि मैं कानपुर में रहा था दिल्ली आने से पहले, अभी थोड़े दिन पहले. I was staying at Kanpur IIT. वो कानपुर IIT में रह रहे थे. Many wonderful, wonderful devotees are staying there. और बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज से मिले. Yes, Prabhuji. I was supposed to come to your beautiful temple, but I was sick that day and I couldn't come for Bhagavatam class. उनको टेम्पल में आना था, कानपुर टेम्पल में आना था भागवत क्लास लेने के लिए, पर वो उस दिन बीमार पड़ गए तो नहीं आ पाए. Yes. Maybe next time I come, I will be more fortunate. Yes, Prabhuji. You are welcome, Prabhuji. I will try to meet you. Okay, you have such a beautiful temple there. So nice. Yes, my friend. Okay, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare She's Krishna. serving in the temple, Prabhuji. She goes for DT kitchen seva and making garlands. Oh, very sincere Mataji. Back home, back to Godhead. Haribo. Thank you. You can make garlands forever in the spiritual world for Radha Krishna. Yes, Prabhuji. I will take in kids classes, craft and Also drawing, etc. very important service. Kids are our future. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Dandavat Hare pranam. Krishna. Dandavat. Prabhuji, my question to you is that Prabhupada has given us temples which are called Vrindavan. Prabhupada has given us temples in our Yes. local area which are exact replica of Vrindavan. But still I miss Dham, being in the Dham, because the consciousness we have in the Dham and we have in Delhi is quite a lot of difference. And we are more able to easily chant the names, like if we are in Mayapur or we are in Vrindavan, we are more able to concentrate and focus and feel the presence of the Lord and do all the devotional services in a better quality when we are in Dham. And here in Delhi, we have lot of responsibilities, lot of distractions. So the sadhana keeps varying. Sometimes the sadhana is very nice, sometimes it is very low. So we are in constant struggle, and it's not possible always to go to the Dham. And sometimes it is really not possible because of the circumstances. And maybe it is about more than a year that we go to the Dham. So then how can we recharge our batteries? माता Okay, जी a का couple. Yeah, go ahead. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. माता जी कह रही हैं कि प्रभुपाद ने हमारे लिए, जहां हम रहते हैं आसपास ही वृंदावन की तरह टेम्पल्स बनाए हैं, पर जो हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारे मन की स्थिति होती है जब हम मायापुर या वृंदावन में रहते हैं, हम अच्छे से साधना कर पाते हैं, अच्छे से अपनी मालाएं कर पाते हैं, वैसा हमें यहाँ नहीं लगता. कभी कभी हमारे घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि हम नहीं जा पाते, एक साल तक धाम नहीं जा पाते, तो हमें क्या करना चाहिए? I can give you perspective as someone who lives in the Dham. प्रभु जी उस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे जो धाम में रहते हैं, बिकॉज प्रभु जी मायापुर में रहते हैं. If you stay in the Dham full time, then you'll also experience the ups and downs in spiritual life. If you come for a week or 10 days, then everything's bliss, everything's nectar. But if you stay there, then you'll also experience the other side. प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर आप धाम में रहते हैं तो आप भक्ति के उतार चढ़ाव देखते हैं, पर जब आप धाम में नहीं रहते हैं और धाम में सिर्फ 10 दिन के लिए जाते हैं तो सिर्फ आप चढ़ाव देखते हैं, उतार नहीं देखते. So maybe to get real benefit, you should come live in Dham, Mataji. Mataji, do you want to see the down? Yes, Prabhuji. In any case, but not possible right now.
I know, I'm just teasing. I was there yesterday, actually, in Vrindavan. Oh, Jai. It was very bittersweet. Bitter because Dham has become full, packed full, materialistic people who think that Dham is a playground and a picnic spot. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं कल वृंदावन में ही था, बट वहां पे एक खट्टा मीठा अनुभव हुआ, क्योंकि जो मटेरियल लोग हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि वृंदावन एक पिकनिक स्पॉट है, कि वहां पर जाकर बस मस्ती करना है, मजा करना है. And sweet because there's nothing sweet. Dham is very, very sweet. But we have to be able to sift through the materialistic things and see the spiritual things. And that in Kali Yuga is more difficult. पर मीठा इसलिए क्योंकि वो धाम है, धाम का आनंद ही अलग है. पर Same thing हम in Delhi. हम्म, Where isn't Krishna? Is Krishna only in Dham? पर क्या हम ऐसा सेम अनुभव दिल्ली में कर सकते हैं? क्या कृष्णा दिल्ली में नहीं है? सिर्फ वो धाम में ही रहते Krishna is in हैं. Delhi also. Krishna is in his name. Krishna is on your altar. Krishna is in your heart. Krishna is in prasadam. Krishna is in the heart of other devotees. Krishna is in Gita. Where isn't Krishna? He's a very available. He's very, very merciful Krishna. He's very available. कृष्णा हर जगह है. कृष्णा दिल्ली में, कृष्णा आपके मंदिर में, कृष्णा जहाँ मंदिर, हम इस्कॉन मंदिर में जाते हैं वहां है, आपके मन में है, आपके प्रसाद में है. कृष्णा हर जगह है. We have to develop the art of seeing Krishna. तो हमको यह कला डेवलप करनी है कि हमको हर जगह में कृष्णा को देखना है. Is our vision covered or is Krishna covered? क्या हमारी नजर कमजोर है कि हमें कृष्णा दिख नहीं रहे हैं, या कृष्णा ही कहीं छुपे हुए हैं? Like a cloud. Does the sun become covered by the cloud or is our vision of the sun covered by the cloud? जैसे कि बादल. क्या बादल सूरज को छिपाते हैं या सूरज बादल को छिपाते हैं? Our vision is covered. हमारा नजरिया ऐसा है कि हम बादल को देखकर समझते हैं कि पीछे सूर्य छिपा है. हमारे विजन में प्रॉब्लम है. I went to one wonderful devotee's home for kirtan, little kirtan and breakfast prasadam this morning. प्रभु जी आज सुबह कुछ डिवोटी से मिलने गए थे, कीर्तन करने और प्रसादम के लिए. So I was standing waiting for the car. तो वो वेट कर रहे थे गाड़ी के लिए. All of a sudden I was feeling like I'm in Vaikuntha. ऑल ऑफ अ सडन उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो वैकुंठ में खड़े हैं. The sun was just coming up, beautiful trees, birds are singing. If we have vision, we'll always see Krishna. उनको ऐसा इसलिए फील हुआ क्योंकि सूर्य उदय हो रहा था, सुंदर सुंदर पेड़ थे, चिड़िया चह चह कर रही थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा. ये हमारे नजरिए का फर्क है. अगर हम देखना चाहें तो वैकुंठ यही है और कृष्ण यही है. Your devotee never loses sight of Krishna, no matter where he goes. जो प्योर डिवोटीज हैं वो कभी ये नहीं सोचते, ना ऐसा देखते हैं कि कृष्ण वहां नहीं है. नो मैटर, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहीं पे भी जाएं. Chaitanya Charitamrita says, Stavara Jangama Deki, not Deki Tarmoti. That he sees Krishna in that which is moving, that which isn't moving. He sees nothing but Krishna. जो वो प्रभु जी ने जो बोला श्लोक, उसमें ये मतलब है कि ये इसका फर्क नहीं पड़ता है कि कृष्ण एक चलती हुई चीज में है या रुकी हुई चीज में है. अगर हम चाहें तो हम कृष्णा को हर चीज में देख सकते हैं. कृष्णा हर जगह है. So we have to develop our consciousness to bring the mood of the Dham into our heart, to bring Dham into our heart, make our heart Dham. हमें धाम जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने मन में वो भाव ला सकते हैं धाम का. हम अपने मन को धाम बना सकते हैं. Like Sita said, when they were banished to the forest, she said, Ayodhya is wherever my Ram is. Where my Ram is, this is Ayodhya.
सीता हमेशा ये कहती थी कि अयोध्या वहां है जहां राम है, जहां भी राम है वहां मेरी अयोध्या है। So if we bring our mind to Ram, bring our mind to Krishna, to Chaitanya Mahaprabhu, we're in Dham. This is Dham consciousness. जहां भी चैतन्य महाप्रभु है, जहां भी कृष्ण है, वही धाम है। धाम हमारे मन में है। So you bring Dham to Canada, Mataji. माता And जी you जहां भी जा purify, सकती हैं वहां धाम ले जा सकती हैं। and you purify everyone that needs you. और माता जी जिनसे भी मिलती हैं उनको वो धाम का एक्सपीरियंस दे सकती हैं। Because this is one of the principles of practicing high class bhakti, is to always be living in Dham, physically or spiritually. तो हम वैसा ही अनुभव कर सकते हैं जैसा हम धाम में करें, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है हम जाने की। हम वहां जहां भी रहते हैं हम वहीं पे धाम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है? बहुत सुंदर, वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी ब्यूटीफुल, सोल टचिंग आंसर. You have completely satisfied me. Thank you so much. I can say one more thing to satisfy you more. Yes, Prabhuji, sure. Mataji. Priyanka Mataji. ओके Yeah. माता जी ने कहा कि मुझे आपका आंसर से संतुष्टि मिली, तो प्रभु जी कहते हैं मैं एक और चीज कहता हूँ आपको संतुष्ट करने के लिए। And even a more intense experience of Dham is to feel separation from Dham. आपको धाम का अनुभव लेना है तो उससे ज्यादा बेटर फीलिंग है कि आप धाम से दूर रहें, क्योंकि आप सेपरेशन फील करते हैं। And for that reason, sometimes Krishna puts us in a situation where our feeling of separation is so intense that we feel we're more with Krishna, away from Krishna. This is called deep pralambana. क्योंकि जब हम धाम से दूर रहते हैं तो हमें ज्यादा फीलिंग आती है कृष्ण की तरफ जाने के लिए, तो हम कृष्ण को ज्यादा अपने पास फील कर पाते हैं, हम उनको अनुभव कर पाते हैं अपने आसपास। Like when in Uddhava Sandesh, Rupa Goswami's book, Krishna sent Uddhava to pacify the Brajbasis. कृष्ण ने उद्धव को भेजा था, उद्धव जी को भेजा था ब्रिजवासी को पैसिफाई करने के लिए, ब्रिजवासी को शांत करने के लिए, क्योंकि उनको सेपरेशन का भाव बहुत था। Uddhava is a disciple of Brihaspati. He's a jnani, but very, very dear to Krishna. उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे पर बहुत डियर डिवोटी थे कृष्णा के। So he is telling Brajbasis that Krishna is God. He's the Supreme Lord. He's everywhere. He has no top, no bottom, no back, no front, no side, this side. He's pervading. He pervades the universe. He's God. How can you feel separation from Krishna? He's everywhere. तो उद्धव जी ब्रिजवासी को बोलते थे कि आपको कृष्ण से दूर क्यों फील होता है, कृष्ण तो हर जगह है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कृष्ण आपसे दूर है। But they're simply crying for Krishna. पर वो रो रहे थे कृष्णा के लिए। The cows are not leaving the Goshala. The cowherd boys are lying on the ground. They're not going out cow herding. Mother Yashoda is sitting in Krishna's room, simply crying, looking at Krishna's toys, Krishna's stick, his robe, his clothes, sitting, lying on the floor, crying her eyes out for Krishna. जो गौएं थी वो गौशाला से नहीं निकलती थी, जो गौएं चराने वाले कावहर्ड बॉयज थे वो गौएं चराने नहीं जाते थे। यशोदा मैया कृष्ण के कमरे में ही बैठी रहती थी, कृष्ण के खिलौने देखती थी, कृष्ण का कमरे देखती थी और कृष्ण को हमेशा याद करती रहती थी। And Gopi situation indescribable. और गोपीज की तो बुरी हालत थी, उनको तो उसको तो बयान ही नहीं किया जा सकता। So when Uddhava sees this, he is very astonished. Krishna sent him for this reason, to see what is the quality of love of the Brajbasis. इसीलिए कृष्ण ने उद्धव को भेजा था कि जाओ देखो कि कृष्ण की ब्रिजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। So he told them, cry more, cry more, cry more. They told them to cry more. Uddhava told the Brajbasis.
Okay. He originally meant to pacify them, to bring them peace, shant. Then when he saw their condition, he said, cry more, cry more, cry more. उद्धव उनको शांत करने गए, पर उन्होंने उद्धव ये बोलते कि और रो और रो और रो. Because by the separation of Krishna, we're closer to Krishna than we are in meeting. क्योंकि जब हम कृष्ण से दूर होते हैं तो असल में हम कृष्ण के ज्यादा पास हैं इन कंपैरिजन में कि जब हम कृष्ण के पास हैं. So we need to live in Dham in our consciousness. तो हमें By कृष्ण के separation from Dham. तो हमें धाम में अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी बुद्धि, अपने मन में रहना है, क्योंकि हम वहां सेपरेशन फील करेंगे और धाम का आनंद भी ले पाएंगे. We prepare our heart, but we prepare our heart for meeting by experiencing separation. ताकि हम अपने हृदय को तैयार कर सकें, क्योंकि जब हम कृष्ण से मिलेंगे उस सेपरेशन को फील करने के लिए हम धाम से दूर रह के अपने हृदय में वो फील कर सकते हैं, वो भावना को फील कर सकते हैं. So these things are to be understood in the higher understandings of bhakti. ये सब समझने के लिए, ये सब हम तब समझते हैं जब हम भक्ति की हायर स्टैंडर्ड्स पे, उच्च स्तर पर पहुंचते हैं. For example, why when Ram is running through the forest, chanting Sita, 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 in anguish, separation from Sita, is he actually separated? प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे हैं श्री राम का. जब श्री राम सीता जी को ढूंढते हैं और जंगलों में घूमते हैं और कहते हैं सीते सीते सीते, क्या सच में राम जी सीता जी से अलग होते हैं? Can Lakshmi ever be separated from Narayan? पर क्या लक्ष्मी जी नारायण से कभी दूर हो सकती हैं? So they're never separated. वो कभी अलग नहीं हो सकते. But in Leela, to taste Vipralamba Bhav, this intense, most intense feeling for God, there is separation. पर लीला में ये भाव का अनुभव करने के लिए हमें ये भाव का अनुभव करने के लिए ये सेपरेशन होता है, ये दूर दूर होते हैं वो. When Sita entered the earth, leaving Ram completely, indescribably unhappy, distraught. This is Leela. Ram can make millions of Sitas. जब सीता जी दूर होती हैं राम जी से, पर राम जी इतना ये अनुभव करते हैं, दूर का सेपरेशन का अनुभव करते हैं, पर राम जी तो बहुत सारी सीताएं बना सकते हैं. But he's more with Sita in separation than he is in meeting, more in Vipralamba than in Sambhog. वो वो सीता माता के पास ज्यादा, सीता माता के साथ ज्यादा तब अनुभव करते हैं जब वो सीता माता से दूर होते हैं. So same thing with Dham. ऐसा ही धाम के साथ है. We have to bring Dham in our heart. हमें धाम को अपने मन में लाना है. And for that we have to push out all the other things. उसके लिए हमें अपने मन से बाकी सब चीजों को निकालना है. Because bhakti and kam, krodh, lobh, matsarja, those things also live in our heart. क्योंकि हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ सब चीजें रहती हैं. Bhakti is there and other bad things are there also. हमारे मन के अंदर भक्ति भी है पर बुरी चीजें भी हैं. So if we water the bhakti lata bij by hearing and chanting, bhakti grows more and pushes out all these other negative things. तो अगर हम भक्ति के पेड़ को वाटर करते हैं, जल देते हैं, तो भक्ति का जो वृक्ष है वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और जो सारी बुरी चीजें हैं उनको बाहर निकालता है. But we have to do so very carefully. तो हमें बहुत ध्यान से भक्ति के वृक्ष को पानी देना है.
These other things that live in the heart are called, according to Chaitanya Charitamrita, upasaka. Upasaka means unwanted creepers. चैतन्य चरितामृत ना अकॉर्डिंग टू ओके चैतन्य चरितामृत के हिसाब से उपसख का मतलब होता है उपशाखा, उपशाखा unwanted plant, unwanted creepers. So if उपशाखा we, को बोलते हैं अनवांटेड मतलब जिनकी जरूरत नहीं होती है, ऐसे पेड़ जिनकी जरूरत नहीं है. so as we water the Bhakti Lata Bij, we may be careful not to water these other unwanted creepers. जब हम भक्ति लता वृक्ष को पानी देते हैं, जल देते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे पेड़ों को, ऐसे मन के विचारों को पानी नहीं देना है, बढ़ाना नहीं है, जिनकी जरूरत नहीं है. And something like this happened once in one of our ISKCON temples in the old days. ऐसा एक बार ही हुआ था हमारे इस्कॉन टेम्पल में, पुराने दिनों की बात है. There was a plant that devotees were worshipping. They thought it was tulsi. It was not tulsi. एक बारी ऐसा हुआ था कि डिवोटीज को ऐसा, भक्तों को ऐसा लगा था कि वो तुलसी वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, पर असल में वो तुलसी वृक्ष नहीं था. So they're offering arti, yani kani, chapapani, vrindayi, tulsi deva, priya Krishnavasa. It was not, it was a weed. पर वो उन्हें तुलसी मानकर, उस वृक्ष को तुलसी मानकर उसकी पूजा कर रहे थे, पर असल में वो तुलसी नहीं थी. Nobody knew. पर किसी को पता ही नहीं था. So they just pulled out that weed. Out. This is Tulsi's plant. This is Tulsi's plant. Out. Get out. तो उन्होंने वो जो अनवांटेड जिस उस पेड़ को निकाल दिया और बोला कि ये जगह तुलसी की है, ये तुम्हारी जगह नहीं है. So we have to do this in our heart to make room for bhakti, to make room for Krishna, to make room for Dham. तो हमें अपने हृदय के साथ भी यही करना है. हमें भक्ति के वृक्ष को बढ़ाना है, भक्ति के वृक्ष को जगह देना है, और जो अनवांटेड, जिन पेड़ों की जरूरत नहीं है, जिन विचारों की जरूरत नहीं है, उनको बाहर निकाल के फेंक देना है. This is called the stage of sadhana, anartha nivritti. इसी को ही साधना कहते हैं. Anartha nivritti. अनर्थ निवृत्ति. अनर्थ निवृत्ति. To become free from the influence of all negative things. ताकि हम फ्री हो सके ऐसी चीजों से जो हमारे नेगेटिव चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, जो हमारे मन को प्रभावित करती हैं. And anartha nivritti is the stage of practice where we struggle. अनर्थ निवृत्ति एक ऐसा स्थान है जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं भक्ति के साथ में, तो तब हमें बुरी चीजों को निकालना है. When we come to the stage of nishta bhakti, then the struggle is over. ताकि हम निष्ठा भक्ति की स्टेज पर आ सके, निष्ठा भक्ति के स्थल पर जा सके, ताकि हमारे स्ट्रगल्स ओवर हो जाएं, खत्म हो जाएं. And then we can start to taste ruchi, feeling for Krishna, love of God, preliminary experience of love of God. ताकि हमें कृष्ण के लिए प्रेम आए, कृष्ण को हम प्रेम कर सकें, कृष्ण की भक्ति कर पाएं. And these are the flowers that begin to blossom on the Bhakti Lata Bij. ताकि जो फूल हैं वो भक्ति के जो फूल हैं वो हमारे मन में बढ़ सके, Producing the beautiful fragrance of ruchi and asakti. और उसमें से सुंदर सुगंध है रुचि की और आसक्ति की, कृष्ण आसक्ति की. And when prema begins to bud, this is called bhava. At bhava, we get a vision of our eternal relationship with Krishna. When prema begins to bud. उसी समय में प्रेम भक्ति बढ़ने लगेगा. प्रेम भक्ति का जो बड है, जो छोटा सा फूल है, वो हमारे मन में उगने लगेगा. And prema is the full blown, sweet, juicy, delicious fruit of love of God. और प्रेम जो है वो कृष्ण प्रेम का एक छोटा सा फल है, जिससे हमें कृष्ण प्रेम की तरफ, हम कृष्ण प्रेम का टेस्ट कर पाएंगे, स्वाद चख पाएंगे. So we have to be patient because this doesn't happen overnight.
पर हमें पेशेंट रहना है, हमें हमें स्थिरता से रहना है, हमें ये ध्यान रखना है, ये दिन एकदम से नहीं होता है, रातों रात ऐसा बदलाव नहीं आएगा। But we should be convinced that in due course of time, this is what I will achieve by the grace of God and Guru. बट हमें ये विश्वास रखना है कि गुरु और कृष्णा की भक्ति, कृष्णा के आशीर्वाद से और गुरु के आशीर्वाद से हम उस स्थान तक पहुंच पाएंगे। Anyone has any other question? Are you happy, Nishna Bhakti Mataji? Yes, Prabhuji, totally satisfied. Thank you so Okay, much. good. Thank you so much. Thank you for a wonderful question. Without a good question, there cannot be a good answer. All glories to you, Prabhuji, for such a beautiful explanation. Thank you. और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर हम सेशन को एंड कर रहे हैं. It is about going to be 2 hours now. It's going to be 5 o'clock. और किसी का कोई प्रश्न है? वंदना माता जी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो? और कोई? Yes, Mataji, I can ask one question. Okay. Hare Krishna, Prabhuji. While chanting, some devotees, they do 2 limbs of devotion together, like Shravan and chanting together. I know we should not do it, but if we see 2 situations, माता जी आप अभी ट्रांसलेट कर लो, फिर वरना लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन. ओके माता जी, माता जी कह रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसे भक्तों को देखा है जो 2 चीजें एक साथ करते हैं, श्रवणम भी करते हैं और चैंटिंग भी कर रहे होते हैं. तो मैंने ये भी बोला था कि 2 भक्ति के अंग हमें एक साथ नहीं करने चाहिए, ऐसा मैंने लेक्चर्स में सुना था. तो लेकिन सिचुएशंस अगर हम 2 कंसीडर करें कि एक भक्त जो है सिर्फ चैंटिंग कर रहा है और दूसरा भक्त जो है, मतलब जब हम सिर्फ चैंटिंग करते हैं तो हमें वी ऑल नो कि so many mundane things come in our mind, so our mind is going somewhere else and we are chanting from mouth. But if we are listening to some lectures, our mind is controlled, at least it is hearing Krishna Katha. So they think that this way we are more into Krishna consciousness while doing 2 limbs of bhakti together. I've mixed Hindi and English both. No problem, Mataji. Prabhuji, should I repeat the question? I understand the question. ओके, सो माता जी कह रही हैं कि जब हम सिर्फ चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग करते समय हमारा कई बारी ध्यान इधर उधर जाता है, हमारा ध्यान इधर उधर जाता है. तो भक्त ये सोचते हैं कि एटलीस्ट जब हम श्रवण कर रहे हैं और उसके साथ में चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर ना जाके श्रवण में जा रहा है, हम कृष्ण के बारे में ही सुन रहे हैं. तो हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए? If you do this, you're not getting full benefit of either. पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप श्रवण भी कर रहे हैं और चैंटिंग भी कर रहे हैं तो आप दोनों में से, दोनों एक्टिविटीज में से किसी का भी पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे. And it falls in your japa falls in the category of helanam, of inattentive chanting. और उस जपा को, वो जो जपा है वो ढंग से नहीं है, वो इनअटेंटिव जपा है, मतलब कि आप ध्यान से जपा नहीं कर रहे हैं. Better if you want to listen to a lecture while you're doing something, listen to a lecture while you're cooking or cleaning or driving. तो इससे बेटर ये है कि आप जो वो लेक्चर सुन रहे हैं आप वो तब सुने जब आप खाना पका रहे हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, तो आप तब वह लेक्चर सुन सकते हैं. Let's say, for example, your Guru Maharaj walks into the room. एक एग्जाम्पल है कि हो सकता है एक दिन आप गुरु महाराज आपके कमरे में आ जाएं. While you're listening to a lecture. जब आप एक लेक्चर सुन रहे हैं. Or chanting japa. और या फिर जपा चैंट कर रहे हैं. What will you do? Oh, hi Guru Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. तो आप क्या करेंगे? ऐसे बोलेंगे हाय गुरु महाराज, नमस्ते, प्रणाम करेंगे उनको और फिर चैंट करना शुरू करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. We should give full attention to japa. We should give full attention to hearing, because hearing Shabda Brahman, hearing Krishna Katha, Hari Katha, we should be attentive to that also. You can also hear and be inattentive and not get the benefit. तो आपको दोनों ही काम बहुत ध्यान से करने हैं, पर अगर
Can you come again? You have to do both the activities carefully. Yes, because if you're hearing inattentively and not really hearing, because hearing means that it registers in your brain, not you're hearing, but you're not listening. One should listen carefully and understand what's being said so you can comprehend the message. Okay. तो क्योंकि जब आप सुनते हैं, जब आप श्रवणम कर रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं, आपका ध्यान चैंटिंग में है, तो आप वो जो लेसन है, वो जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप समझ नहीं पाएंगे. तो हमें जब सुनना है तो हमें बहुत ध्यान से सुनना है. Is that okay, Mataji? Yes, Prabhuji, I understood. In both the cases, we are not chanting attentively. So, You're not getting benefit of either. yes. I have also one question. Okay, here it comes. Prabhuji, as I am I'm trying to complete my rounds in the morning, but sometimes some rounds are because I have to go to work, so I need to get ready and everything. So I'm going through cab. It takes me 1.5 hours. So I try to complete my rounds there. So is it the right way? It depends on your consciousness. Are you looking out the window? Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Or are you focused? Hare Krishna, 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 Hare. Where is your consciousness? With Krishna or with the passing scenery? Sometimes it is lot of noise around, so I put in my earphones and listen to the kirtan and then chant. Should I do this or not? You can't. How can you listen to kirtan and chant at the same time? Okay. Listen to kirtan in your spare time. So if I will not do, then some days I miss my rounds. So what should I do then? You do chant. You can chant. You're in a car or a metro. Or how are you traveling? You're in metro? No, through the car, but with different passengers on it. Are you driving? No, I'm not driving. Okay, so chant attentively. We say in English, don't space out. Okay. Not that you're doing something else. Give full attention to Krishna. So you translate question and answer for the benefit of other devotees. Okay. मेरा प्रश्न ये था कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो कभी कभी मेरे सुबह राउंड्स रह जाते हैं, या मोस्टली आई विल से कि रह ही जाते हैं कुछ राउंड्स. तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं कैब में जा रही होती हूँ तो मैं अपने राउंड्स कंप्लीट कर लूँ. और प्रभु जी कह रहे हैं कि तो क्या आपको ध्यान देना चाहिए कि आप गाड़ी से बाहर तो नहीं देख रहे हैं इधर उधर, और ढंग से अपना चैंट कर रहे हैं या नहीं. हमें जब चैंटिंग करना है तो इधर उधर नहीं देखना, अटेंटिवली करना है. फिर मैंने ये प्रश्न किया था कि कभी कभी जब बहुत ज्यादा आवाज होती है तो मैं ईयरफोन्स लगाकर कीर्तन प्लग कर लेती हूँ और तब चैंटिंग करती हूँ. तो प्रभु जी ने कहा ऐसा भी नहीं करना है, उसकी वजह से आप ढंग से अपना राउंड्स नहीं कर पाएंगे. इसका कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता कि आप कैसे, मतलब कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बट आपको जब आप चैंट कर रहे हैं आपको ध्यान लगा के चैंट करना है. Okay? Okay, Prabhu ji, thank you. So Monday morning, remember what I said. Okay, I will wake up half an hour more early, then I will try to complete the rounds at home. That's the best thing, to complete at home. Okay. In your own space, where there's no distraction. Okay. Thank you. Thank you so much, Prabhuji. It was a wonderful session. We had so many doubts and you cleared it so very well. So thank you so much, Prabhuji, for your association and giving us your valuable time. We are so grateful to you and we look forward to more of your association in future also. Aswasmi, thank you for the opportunity. Please excuse me for being late. And the temple internet is so slow. It took me literally 5 minutes to log on. I put it on my phone, boom, it was right there. No So worries. obstacles were there. No problem, Prabhuji. But still we could have your association. That is more important. And I to have yours also. To keep me out of Maya, keep me busy. No time for Maya.
Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. We offer you pranams. Vancha kalpatrubhyacha Uddhavyascha kripasinduevcha kripasindhuveva patitanam pavanebhyo Pavanebhyo vaishnavabhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, इसके सर्वदिक प्रभु की जय. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gaurang. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Nitai Gaur, Nitai Gaur. Jai Gaur Premanande. Thank you, Priyanka Hari Hari Mataji. Very expert translation. All glories to you. Prabhuji, I tried. Sorry if I did mistake or I have asked you to repeat again. I'm sorry. No, no problem. No problem. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Give me a blessing so Krishna. that I can do more service like that. All blessings. Hare Krishna. Thank you. Hari Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Dhanvat Krishna. pranam. Dhanvat pranam. Thank you, Priyanka Mataji, Vandana Mataji, Yachna Mataji, all Nitai Priya team soldiers. So we will chant loudly for Priyanka Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare. Hare. Thank you. All our blessings to you. Thank you so much for supporting for the class. Thank you everybody. Nitai Priya team soldiers ki jai. So from next year we are going to start with our nursing katha. So please आप लोग Friday Saturday class में आइए और अलग-अलग speakers भी आएंगे. So till 4th of May we are going to have continuous